Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is volume and surface area of the solids. Exercise 14D, question number 6. Statement of the question is the figure shows a solid cylinder of diameter 24 centimeter and height 32 centimeter. A cylinder of diameter 10 centimeter and height 14 centimeter is removed from the original cylinder. This is evident from this figure. This is the bigger cylinder and this much is the smaller cylinder which is removed from the bigger cylinder. Now number 1, find the volume of the remaining solid, means volume of the material we have to find out. The remaining solid is to be painted on all its surfaces, and then in part 2 we have to find the area that will be covered in paint. Now first of all we will find out the volume of this solid, right? Now part 1, volume of the solid, it is equal to volume of bigger cylinder minus volume of smaller cylinder. As the smaller cylinder is removed from the bigger cylinder, so this way volume of bigger cylinder हम find out करके और volume of smaller cylinder calculate करके उसमें से minus कर देंगे to find out volume of the remaining solid, right? Now we do solve. You know the formula for the volume of the cylinder very well. Yeah, area of the cross-sectional circle multiplied by height of the cylinder. So this way we just put the values and solve it. It's equal to the value of pi multiplied by 12 square. Over here we are given the diameter 24 centimeters, so the radius would be half of it. So and then multiplied by height of the cylinder, that is 32. Then for the smaller cylinder, pi multiplied by the diameter of the smaller cylinder is given 10, so half of it would be the radius, and so 5 square multiplied by height of the smaller cylinder, that is 14. This way, now calculating it 14,482.29 minus, when we have calculated this much, it comes 11 hundreds, means 1100. Their difference comes 13,382.29 centimeter cube, and to 3 significant figures it would be 13400, 13,400 centimeter cube, to 3 significant figures, right? This way the volume we have found. Now for the surface area of this solid. Now the second part, we have to find out the area which is covered in paint. So required area that is equal to surface area of
the solid. अब ये कौन सा एरिया होगा, इसमें पहले ये क्लियर कर लीजिए. इन द फिगर, अगेन आई कम बैक टू द फिगर. ये देखिए, टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एरिया हम पहले डबल ऑफ द बेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. ये देखिए, ये बेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर भी बेस एरिया, क्योंकि ये टॉप पर इतना एरिया और प्लस ये वाला एरिया, तो ये जब इधर शामिल कर देंगे तो ये भी तो बेस एरिया के बराबर ही हो जाएगा ना. ओके, देन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर. तो इन तीन हिस्सों में इसे हम फाइंड आउट करेंगे. देन एडिंग ऑल दीज थ्री we will find out the required surface area. Now we find it out. 2 multiplied by base area which is a circle, right, plus curved surface area, a curved area of bigger cylinder plus curved area of the smaller cylinder of now we do it 2 times the base area, which is a circle, and the circle of the bigger one cylinder, that is given how the diameter उसका given है हमें. So 2 multiplied by pi multiplied by r square. R square means 12 square, half of the diameter. Okay, now plus curved area of the bigger cylinder. So curved area of the bigger cylinder find out करने के लिए the circumference of the bigger cylinder multiplied by height of the cylinder. So that would be 2 pi r 2 pi r multiplied by height of the cylinder, that is 32, plus 2 pi r of the smaller one cylinder, that would be 5, multiplied by its height, which is 14. Now solving all this stuff, and these three values when will be added with one another would result into the required surface area. अब हम इसे solve कर लेते हैं. We have calculated all this stuff with the help of calculator. It resulted 905.14 plus 2413.7 plus 440. Adding up all this stuff, we have got 3758.84 centimeter square, which is nearly equal to 3760 centimeter square to 3 significant figures. This way we have found the required surface area, right? Now question number 7, the statement of the question: the figure shows a solid trapezoidal prism
with a cylindrical hole of diameter 30 centimeter. This all is evident over here in the figure. Given that AB equal to DC equal to 40 centimeter, this much 40 centimeter, AB equal to DC is 40 centimeter, then PQ equal to SR equal to 88 centimeter. This PQ equal to SR equal to 88 centimeter. PS equal to QR equal to 25 centimeter. This way QR and PS equal to everyone is equal to 25 centimeters. AP equal to BQ equal to 74 centimeter. This much AP equal to DS, which is equal to 74 centimeter. And the height of the solid is 70 centimeters. Height of the cylinder is this much. अच्छा, ये हाइट कौन सी है? हाइट ऑफ द ट्रैपेजियम, ठीक है. हाइट ऑफ द राइट प्रिज्म कुछ और होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. दिस इज हाइट ऑफ द ट्रैपेजियम, जो कि इसका यहाँ पे बेस एरिया नज़र आ रहा है, उसके लिए इट विल वर्क लाइक हाइट 70 सेंटीमीटर. Find the volume. Number 2, the total surface area of the solid. अब इसमें देखिए कि ये अगर हम इसे एक प्रिज्म के तौर पर सॉल्व करें तो इसका वन फेस जो है, जो बेस एरिया है, दैट इज़ ट्रैपेजियम, ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स होंगी और इनके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 70 सेंटीमीटर, लाइक हाइट ऑफ द ट्रैपेजियम. अच्छा, अब उसके बाद हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या होगा? हाइट ऑफ द प्रिज्म ये होगा 24, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर, यानी QR जो कि इक्वल टू PS है, जो कि इक्वल टू AD है, जो कि BC के बराबर है. सो ये सारे बराबर होंगे, इसीलिए तो ये हाइट ऑफ द प्रिज्म के तौर काम करेगा, राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम. वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम बेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद द हाइट ऑफ द प्रिज्म. तो बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे इस ट्रैपेजियम का, ट्रैपेजियम ABQP का, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ दिस सर्कल, ठीक है. इस तरह से बेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. देन दिस बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म, यानी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस वे वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द solid. Now in question number 7, part 1, volume of cylinder, volume of the solid, that will be equal to base area multiplied by height. Height of what? The prism. Height of prism. Now we find it out. Base area is what? You know, base area है ट्रैपेजियम और उसमें से सर्कल को माइनस किया हुआ, बिकॉज स्टेटमेंट में है कि सॉलिड ट्रैपेजॉइडल प्रिज्म विद अ सिलेंड्रिकल होल, ठीक है. सो बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रैपेजियम का. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो वुड बी 40 प्लस 88
multiplied by 70 divided by 2 माइनस, अब हमें जो सर्कल मिला हुआ है उस सर्कल की क्या सूरत हाल है? उस सर्कल में ये है कि डायमीटर गिवन है इसका 30, सो जो रेडियस होगा वो 15 हो जाएगा. सो हम फाइंड आउट करते हैं दिस पाई multiplied by r square. R is 15 square, and this whole is in multiplication with height of the prism. That is, how much height of the prism is? 25. Now solve it. This way we have calculated the area of the trapezium minus area of the circle, and whole is multiplied by height of the prism. That is equal to 4480 minus 707.14 whole multiplied by 25. 3772.86 multiplied by 25, that is equal to 94,321.5, which is nearly equal to 94,300 centimeter cube to 3 significant figures. This way we have found the volume of this solid. Now we find out surface area. To find out surface area, you know very well that double of the base area plus perimeter of base multiplied by height of what? Prism. This way we find out the surface area of any solid, prism, and this solid is just like a prism. So keeping in mind the way to find out surface area of the prism, we will find out the surface area of the required solid. Now we solve it. It is equal to 2 multiplied by base. Now 2 multiplied by base area. Now finding out the surface area this way, double of the base area plus perimeter multiplied by height of the prism. ये देखिए बेस एरिया आप पिछले पार्ट में भी कर चुके उसी अंदाज में, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस पेरीमीटर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ट्रेपीजियम जो एक फेस ट्रेपीजियम है बेस एरिया का, उसमें तमाम चारों साइड्स को एडअप किया प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट, इन दोनों को सम अप करके मल्टीप्लाइड बाय 25. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स. इसे वर्कआउट कीजिए, इट बिकम्स 4480 माइनस, इसे वर्कआउट कीजिए, इट कम्स 707.14 plus adding all these 4 sides of the trapezium, it becomes
276 plus this circumference of the circle becomes 94.29. Their sum multiplied by 25 equal to 2 times इनका डिफरेंस आ जाएगा 3772.86 प्लस इन दोनों को हम सम अप करें तो इट बिकम्स 370.29 in multiplication with 25. Either double of base area becomes 7545.72 plus this product of perimeter and height of the prism becomes 9257.25. Now sum of these two, it becomes equal to 16,802.97 centimeter square, which is nearly equal to 16,800 centimeter squares to 3 significant figures. Right? This way we have found the surface area of this solid. Now question number 8. The statement of the question: a C-shaped solid with an initial radius of 6 cm and a uniform thickness of 1.5 cm has a height of 8 cm. This is this solid, C-shaped solid. Now find out number 1 the volume, number 2 the total surface area of the solid. Now we find out its volume. Question number 8, part 1, volume of solid equal to, ये देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म, वही तरीका तैयार करेंगे. यू नो इन दिस फिगर we will find out this base area of this C shape. Then we will multiply it with height of the prism. Height of the prism is over here 8 centimeter. तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द आउटर सेमी सर्कल. देन एरिया ऑफ द इनर सेमी सर्कल वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट. तो ये हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया. फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट ऑफ द प्रिज्म से. सो दिस वे वॉल्यूम विल बी फाइंड आउट इक्वल टू बेस एरिया multiplied by height of what? Height of prism. Now we work it out. Base area क्या है? That is the area of the outer semicircle minus area of the inner semicircle. तो ये देखिए
पहले आउटर सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। 22/7 r square. How much r is? This is 6 plus 1.5, so would be 7.5 square, and half of it क्यों? इसलिए कि सेमी सर्कल है। देन माइनस 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, बिकॉज ऑफ सेमी सर्कल्स, राइट। देन मल्टीप्लाइड बाय height of the prism, which is 8 centimeter. Now this is equal to this 1/2 is cancelable with this 8, 2 1 time, this 8 4 times. Now solve it. It is equal to 22/7 multiplied by 7.5 square. It is 176.79 minus 113.142 and multiplied by 4. This is equal to 63.5 multiplied by 4, which is equal to 254 centimeter cube. This way we have found the volume of this cuboid, this solid. Now we find out the total surface area of the solid. उसके लिए वही तरीकाकार जो हम प्रिज्म के लिए करते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द डबल ऑफ द बेस एरिया प्लस perimeter of the base multiplied by height of the prism. Total surface area it will be equal to double of the base area plus perimeter of the base multiplied by height of the prism. This way we will find out total surface area of this solid. Now we work out. देखिए ये डबल ऑफ द बेस एरिया, और as सेमी सर्कल्स आर इन्वॉल्व ओवर हियर, सो हमने 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ आ जाते हैं फॉर पेरीमीटर ऑफ दिस बेस। तो इधर देखिए कि हमने पहले सरकमफेरेंस ऑफ आउटर माइनस सरकमफेरेंस ऑफ इनर डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद प्लस 1.5 प्लस 1.5 वो जो थिकनेस थी, ठीक है। उसके बाद इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया विद द हाइट ऑफ द प्रिज्म। अब हम इसे वर्कआउट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 7.5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, एंड दिस इज पाई विच इज टेकन कॉमन ओवर हियर, देन प्लस पाई मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये डबल और ये हाफ आपस में कैंसिल आउट हो गए 2 के साथ,
multiplied by height of the prism. Pi multiplied by 20.25 plus this will become 7.71 multiplied by 8. Now 63.64 plus 61.68. Excuse me, over here instead of minus it should be plus. So this way 7.5 plus 6 results 13.5, and over here then becomes 42.43, और जब ये 3 में प्लस हो जाएगा तो 45.43 मल्टीप्लाइड बाई 8, इन दोनों को हम एडअप करेंगे तो इट रिजल्ट इज इक्वल टू 427.08, which is nearly equal to 427. Correct to 3 significant figures. The unit is centimeter square. This way we have found the surface area of this solid, right? By finishing this question, we have concluded the exercise 14D. All the best. Allah Hafiz.